training them to acquire the necessary skills and competencies to register themselves as a certified healthcare professional worldwide. Based in Sydney, Australia, academically engages with global healthcare educators, healthcare industry experts, universities, higher education institutions to provide demanding healthcare courses for the global audiences. Today's resource person is Dr. Akram Ahmad. He earned his PhD at the University of Sydney, Australia. Then D Pharma, B Pharma, you know, from Burns registrar, researcher, and research manager. And he is also serving at the Children's Hospital at Westmead, Sydney, Australia. And he is also the founder and CEO of Academically as we know it. He is also an editor-in-chief of the Journal of Pharmacy, Practice and Community Medicine. Dr. Akram did his PhD from the Faculty of Medicine and Health, the University of Sydney as we know it. He is currently working as Burns researcher and research manager at the Children's Hospital at Sydney. Previously, he was the pharmacy academic and has taught pharmacy practice and clinical pharmacy at UCSI University, Kuala Lumpur, Malaysia. His research program covers areas related to medication use optimization, patient preference and adherence, drug safety, pharmaceutical education, pharmaceutical policy encompassing about access and affordability of medicines, quality use of medicines in community and health economics. He has active research collaborations and linkages in over 10 countries, including in world's leading universities such as the University of Sydney, Australia, Boston University, USA, University of Huddersfield, UK, University of Virginia, USA, Marshall University, USA, and the University of Queensland, Australia, and the University of Alberta, Canada, and many universities in Malaysia, India, Nepal, Ethiopia, UAE, Saudi Arabia, and Pakistan, etc. He has published over papers, book chapters, conference papers, including in high-impact journals such as the Lancet Infectious Diseases, the Lancet Global Health, PLOS 1, BMC Public Health, Journal of Religion and Health, Pharmacy Practice, Disaster Medicine and Public Health Preparedness, and Indian Journal of Pharmacology, etc. In his credit, a total of 110 publications with a total of 200 plus impact factor points, 2200 plus citations, and H index of 25, and um, uh, and I-10 index of 56. Akram is the recipient of prestigious Best Promising Researcher Award from the UCSI University in 2016 with a prize money of RM 10,000. Dr. Akram also recipient of International Postgraduate Research Scholarship and Associated Australian Postgraduate Award to share his views on the topic overseas job opportunities for pharmacists and career guidance. Please, sir. Okay, thank you so much, sir. My pleasure, sir. So hi everyone, this is Dr. Akram here. So I'm a lead pharmacist. So I've completed my diploma in pharmacy, bachelor of pharmacy, and pharmd PB from India. And I also work in India as a pharmacy practice lecturer. And then I moved to Malaysia, there where I work around 4 years. And last 6 years, I'm teaching in Australia. So I have basically a teaching experience. Might be not aware the opportunities in abroad. And most of the students basically complain in India that this course is not good. And there's not much, So this is not true. There's a lot of opportunities in abroad. So I'm going to discuss regarding the opportunity. I will let you know. And apart from this, you can ask me any questions or any doubts you have in English or Hindi or whatever So you can ask me, or you can type your questions so I can read in the chat box so I can give the answer. Okay. So I think आपकी faculty already यहाँ पर है और तो शर्माने वाली बात नहीं है, जो भी आपके मन में है तो पूछिएगा जरूर, ठीक है? So let me give very short introduction. I mean, short presentation. So academically, basically a Australian company. So right now I'm in Australia, Sydney. Right now here is the 7 p.m. time in Australia. So we provide assistance for all healthcare professionals, whether it's like a medical doctor, dentist, pharmacist, nurses, lab technician, and so on. Anyone want to migrate, anyone want to
practice in another country, so you need to write some exam and become a registered pharmacist in that country, so you can practice basically. For example, if as you know, if many Indian MBBS doctor, they are going to study in like Russia, China, Ukraine, and Philippines. Now, if they want to practice in India, then they have to pass FMG exam from government of India, right? Then only they can practice in India. The same for you as a pharmacist. If you want to work in abroad, so you need to write some exam, and then you can be a registered pharmacist in that country. And then you can practice. Okay. So I'm going to basically discuss this step by step how you can achieve. And this exam really very easy exam, and you can basically give this exam in India itself. There are so many centers in India. So this is about myself. So I think already mentioned, and sir also mentioned, give very long introduction. So we basically provide two services. One is the study abroad. So if you want to do like any MS or master degree in Australia, then we can help you to get your admission. But this course is, very expensive. You have to pay around 30 to 50 lakh Indian rupees fees. Okay. So I do not recommend for anyone to go study in abroad. Okay. So the next step, I mean, the very easy process for you and cheap and best, I can say, for you to register yourself as a pharmacist. You can do a registration here, and then you can practice here in Australia and New Zealand very easily. So any pharmacist want to register, want to practice, want to migrate to Australia. So there is a two kind of pharmacists in general in Australia: retail pharmacist, not hospital pharmacist. Same in like in India, right? So for this, you need to. So there is some steps you need to complete in order to complete. I mean, to migrate to Australia. Okay. So the first step called initial skill assessment. Okay. So nothing but they will just want to check your documents. So any pharmacy school in India, it is approved by PCI. This is automatically your degree is eligible to practice in Australia. ठीक है. तो बहुत ही सिंपल सी चीजें हैं वो लोग आपके दे विल चेक योर डिग्री बेसिकली कि आपने डिग्री कहाँ से क्या है वो डिग्री जो है मस्ट बी अप्रूव बाय इन इंडिया फॉर एग्जांपल यूजीसी एंड अपना जो पीसीआई है ठीक है वो कॉलेज अगर अप्रूव्ड है पीसीआई से देन आपका डिग्री भी यहाँ पर असेसमेंट हो जाएगा एनी कॉलेज ठीक है तो इन जनरल दे जस्ट वांट टू चेक योर डिग्री इज नॉट फेक एंड यू ग्रेजुएट फ्रॉम XYZ यूनिवर्सिटी and then they will also check your registration. You must be a registered pharmacist in the home country. So once you pass your Bachelor of Pharmacy, whether you are B Pharm or M Pharm or Pharm D here, whatever you are doing, so you must be registered pharmacist in the State Pharmacy Council. For example, you are from Rajasthan. Then you must be a registered pharmacist in the State Pharmacy Council, and then you can apply. Okay, so this step we will help you to complete. So no need to worry. This is just a documentation process. So we will complete this process. Then next step called KAPS exam. This is called Knowledge Assessment of Pharmaceutical Sciences. So this is basically you need to pass this exam, and there's a center in Delhi, Noida, Gurgaon, and Pune, Mumbai, Bangalore, Hyderabad, Chennai. So there's 8 exam centers currently in India. So in this exam they conduct yearly 3 times, like March, July, and November. So you can write anytime, and once you write and get the result, and then you can eligible to apply for this. So this is the number 2 step, and we will provide you the online coaching from Australia. So we have mobile application, and you can use your laptop or whatever you have the device. We will provide you 4 month coaching, and this 4 month coaching you will 100% able to pass the exam in your first attempt. And then there is a third step. You also need to pass a English test. Okay, this is like IELTS, OET, or PT. So we will also provide you the coaching for these exam also. So all these steps we will help you to complete. So no need to worry. These are the 3 steps only you need to complete, and then you can register yourself in Australia, Australian Pharmacy Council, and then you can migrate to Australia. So this is for retail pharmacist and same for hospital pharmacist. And one important point here, no work experience required. So if you have a zero work experience, you're just fresher,
and you might be in final year if you are B form, you are looking to migrate in Australia. So still, you can start your preparation with us. So zero work experience required to migrate to Australia. Work experience is not required. Okay. But someone is already completed bachelor degree in pharmacy, B Pharm or M Pharm or PharmD. Now you are working in the pharmaceutical industry, many in any manufacturing unit, or maybe in the QA/QC department, maybe F&D department, that kind of thing. If you are working there, then you can migrate as a industry pharmacist. Okay. And for this, no pharmacy exam, but assessment need to be done, and then English test need to be done. And same for, but there is a 2 year work experience required for industrial pharmacist. Same for technician, they need at least 1 year work experience. But 90% jobs in Australia available in the retail pharmacy or hospital pharmacy. Okay, so if you pass the exam and become a pharmacist, so guaranteed you will get the job and the visa. Okay, but if you are, many students, they ask me this question, sir, I want to migrate Australia first as a industry pharmacist or pharmacy technician, then I maybe write the exam once I will in Australia. Okay, so once you move Australia, very difficult for you. You will not find the time to write the exam. It's because you need to earn the money to support yourself or your family. You need to earn the money, right? So you have not much time. So better to write this exam from your home country and then migrate to Australia. Some of you always ask me this question, that's the university lecturers, can we apply this. So yes, you can apply, and but the getting a visa very difficult, and getting a job also in academia very, very difficult, and almost like no, because here only 8 pharmacy college in Australia. Now you can consider in India how many pharmacy college we have. We have around 6,000 pharmacy college, including diploma, B Pharm, PharmD, M Pharm, all these colleges there are. So we have a lot of pharmacy colleges currently in India, but in Australia only 8 pharmacy college. So getting a teaching job is very, very difficult in Australia. Okay. So I personally know 2 of my friends from Dehradun. Maybe some of you might be know. Jitendra Negi is my friend basically. So he was working as an associate professor in Dehradun. So he passed the exam and he migrated with his wife. They both husband and wife basically a associate professor one of the college in Dehradun. They passed the exam. Now they are working as a retail pharmacist. Happily, they are living here in Melbourne, and they have 2 beautiful kids. Okay, so if you anyone is looking, to migrate, so best for you to pass the exam. And if you pass the exam, registered pharmacist in Australia, even there is a double chance for you to get a job as a lecturer. Okay, for example, someone did PhD and working as a lecturer, still they can pass the exam, become a pharmacist in Australia, and then apply the job. You will get a positive response. Without exam, you are without register yourself, you are looking a job very difficult, and I can say very low chance to get a job. So these are the some steps. As I mentioned that this is the first step, initial assessment you have to do. We will do for you. Then KAPS exam will provide the coaching. This exam will provide the coaching. So Australia and New Zealand have the same steps. Okay, but there is some difference in the both countries. So if you see, this is the basically map of this is Australia and this is New Zealand. So New Zealand is a very, very small island, very small country as compared to Australia. As Australia is a big country and there's a big opportunities in Australia, I can say. So I'm here somewhere in Victoria. Sydney is here, and this is the Canberra is the capital of Australia. You can see in the map. So there is some difference in these two basically. So Australia does not require any work experience. So zero work experience, you can migrate to Australia. But in case of New Zealand, required at least 1 year working experience in the retail pharmacy or in the hospital pharmacy. You must have at least 1 year work experience. Then only you can apply for New Zealand. But in case of Australia, uh, there is no work experience required. Okay. Second difference in Australia, you can write as many times you want the exam. There is no exam, there's no restriction for you. But for New Zealand only, they give only second attempt, 2 attempts only you can take. There is no third attempt if you fail in the exam. But we have very good track record to pass this exam. Up to 93% students pass from academically in their first attempt. No need to worry. I mean, this exam is really very easy exam, I can say.
So these are the documents we need for skill assessment. Basically, we are looking for the if someone is a like bachelor degree holder, B form, we need your degree transcript or registration as a pharmacist, passport, national ID like Aadhaar card. Please mute yourself and you can ask the question at the end of webinar. And then we need your birth certificate, passport size photograph. So these are the documents required to submit to Australian Pharmacy Council. So this is the first step need to complete it by the Australian Pharmacy Council because you are trying to register yourself with Australian Pharmacy Council as a registered pharmacist in Australia. So you need to pay the fees 1310 Australian dollar. In Indian rupees, around 70,000 Indian rupees you need to pay for this first step. Okay. And this is my so when I moved to Australia as a PhD student at University of Sydney, so this is the oldest university in Australia. So this is established in 1849. This university is very, very old university. This is the first university built in Australia. And pharmacy school also one of the oldest school in the world. I can say one of the oldest. So here somewhere Sydney Pharmacy School, and they established 1899. This pharmacy school. Okay. So yeah, so this is very old building. You will feel amazing if you are in this uni. So I was lucky to got admission from this uni. I did my PhD from here. So this is very reputed university in Australia. This is like worldwide very prestigious university. Yeah, so this KAPS exam, this is the step 2. And for this, basically, the full form this exam, knowledge assessment of pharmaceutical sciences, KAPS exam, and the fees you need to pay this fees to book the exam, and you can give this exam in India. So there first of all, there's no negative marking for this exam, okay? And the passing marks required only 50%. So no negative marking, only 50% marks required. So they will give you the 100 multiple choice question and 2 hour time, okay? And you need to score 50%. Only 50 question if you correct, and you will pass the exam. So these are the 4 domains. They will ask the question like pharmaceutics, pharmacotherapy, and chemistry, and pharmacology and physiology. Okay. Then there will be a 2 paper 1 and paper 2 in the same day you need to write. Okay. For example, there is the exam in the morning 9 to 11. The paper 1 and paper 1 they will ask you basically in pharmaceutical chemistry 30 questions and 70 questions from pharmacology and physiology. Okay. So in that case, you just need to score 50%. And paper 2 also again for 2 hour time. And again 50% you need to correct the answer and no negative marking. So in general, this is very, very easy exam. If we compare this exam with GPAT, so really very easy exam, or GPAT or NIPER J. So those exams are a really tough exam, but this is really easy exam. They just want to check your knowledge only. So अगर आपने 100 में से 50 क्वेश्चन सही कर दिए, you will pass the exam. And in the result also they will give you only fail or pass. There is no certain percentage. Whether you score 90% or 50% doesn't matter. You just need to pass this exam to practice in Australia. So once you give this exam, after 2 to 3 weeks, you will receive the result. And once you pass the exam, they will give you a letter. Okay. And based on this letter, you have to apply your PR visa, permanent visa, and you can migrate with your family, with your wife or husband or your kids. Okay. Or if you are a single, then that's not a problem. I mean, there's the advantage for you. So the exam centers in India, there are 8 exam centers currently, like Delhi, Noida, Gurgaon, Pune, Mumbai. So these exams conducted by the Australian Pharmacy Council. Government of Australia is conducting these exams because they need a lot of pharmacists. The only 8 pharmacy college currently, as I mentioned earlier, if they increase like at least 40, 50 colleges, then there is no demand. Okay. So that's why they need 2 to 3,000 pharmacists from abroad to work in Australia. There are the 8 exam centers in India. You can sit in any exams you can give. And this exam they conducted yearly 3 times, like March, July, and November. Okay.
So 3 times they conduct this exam, and this is from Pharma Twitter. Might be, there's a news from us. We published. They published recently about in last exam 90% student pass from academically faster time. And you also need to pass a English test like IELTS academic or OET or PT. We will also provide you coaching for this exam from Australia. So this is also not a problem for you. And then industrial pharmacist, if you want to work, we can help you, but you must have at least 2 year work experience. So we can help you in this. And then technician also need at least 1 year work experience. And these are the some visa you are eligible to apply, like PR visa 190 or 491. And here are some work visas you are eligible to apply. So I think Muzaffar already is here. So he's our student. He passed recently the exam, from and he already applied the visa basically last week. So he's waiting basically, to grant his visa. So it might take like once you pass the exam, it may take around, once you pass English plus CAPS, both are mandatory. Then only you can file your visa. Okay. So visa might take up to 1 to 4 months in general. Okay, you will get the visa and then you can migrate to Australia. So the first time, you have to be work as an intern pharmacist. So internship you have to do 1 year, but you will get the salary for around $30 per hour. And in Indian rupees, I can say around 3 to 3.5 lakh per month. Okay. And then after 1 year, then you can work in as a community pharmacist, hospital pharmacist, and then salary on an average, basically in Australia, around 4 to 5 lakh once you become a registered pharmacist in Australia. Okay, an average time will take around 6 months to 1 year total time. I mean, since day 1 to and to be landed into Australia. Here are some of the reviews, and here are some of the numbers from my academically. So now I can take some of your questions. So you can ask me any questions or any doubt you have. Please ask one by one now, or maybe you can type your questions in the chat box so I can read and I will give the answer. Yeah, yes, please. Dear students, now you can unmute yourself and ask your doubts or any clarification required regarding this process. You can unmute yourself and ask, or you can write it in chat box so that we will be helping you. So students, one thing you need to understand is that this is an exclusive webinar for the Sri Balaji College of Pharmacy students. तो आप लोग ही होंगे इसमें, सिर्फ साथ में जो पढ़ाई कर रहे हैं आपकी फैकल्टी से प्रेजेंट होंगे. ठीक है, तो जो भी डाउट्स आपको है, मतलब जो भी आपको क्लियर नहीं है, आप हिंदी में भी पूछ सकते हो ताकि हम आपको क्लियर कर पाए. राइट, this is about a great opportunity that you are going to have once your program is completed, that you can consider. It's not mandatory. फैकल्टी से सर आप लोग पूछिए, कोई क्वेश्चन होता है, मे बी स्टूडेंट आपसे पूछें बाद में. ये हमारे जानने के बाद. Faculty also, if you have any doubt, so please you can ask. Hello, sir. Yes. Sir. Myself, Pawan Basniwal. Yes, Pawan ji. Yes, sir. What is the syllabus of that KAPS exam? बेसिकली वो सिलेबस थोड़ा सा ऑस्ट्रेलिया की बेस पे, ऑस्ट्रेलियन फार्मेसी काउंसिल पे, पर इन जनरल जो आपने पढ़ा होता ना बी फॉर्म में, वो सिमिलर सिलेबस ही रहता, कोई अलग से नहीं रहता. Any defined syllabus? Yes, this is a defined syllabus. That's why we have to follow that APC, Australian Pharmacy Council, the syllabus. So I think is it available on the website? Yes, definitely. Even in our website also available.
So you can go on our website academically, so they are also available. Okay. And this is basically, they are not much focusing on chemistry, because in India, if you see that syllabus, फार्माकोग्नोसी फार्माकेमिस्ट्री बहुत ज्यादा पूछते हैं, राइट? हमारे यहाँ पर 5 सेमेस्टर तक पढ़ाई जाती है, राइट? तो यहाँ पर इतना नहीं पूछते। जैसे कॉग्नोसी तो एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, एक आधा आएगा तो आएगा, ठीक है? तो कॉग्नोसी तो इट्स लाइक 0 है यहाँ पर, ठीक है? यस, केमिस्ट्री से कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं, लाइक यू नो कि जो है 30 क्वेश्चन आएंगे केमिस्ट्री के, वो भी बहुत ही कोई SAR वगैरह नहीं पूछेगा आपसे, भाई लिख के बताओ पूरा, है ना? वो जनरल कोई स्ट्रक्चर दे दिया उसने आपका कुछ, यू नो, तो उस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, इजी क्वेश्चन आते हैं, ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं होते। दिस जस्ट वांट टू चेक आपकी नॉलेज बस, यू नो। ये बहुत टफ एग्जाम्स नहीं पूछे। जैसे अपना जो नाइपर जेई है या जो है अपना जीपेट है, उसमें वो बहुत टफ क्वेश्चन करता है। Okay. And for teaching profession? टीचिंग मैंने बताया था कि टीचिंग में मेरे कोई दो दोस्त, मैंने बताया था, अभी नाम जितेंद्र नेगी, मेरा फ्रेंड था, अभी वो वहां से आया हुआ है देहरादून से, वो और उसकी वाइफ दोनों PhD थे, वो फार्माकोग्नोसी केमिस्ट्री के। तो वो लोग भी अभी फार्मासिस्ट हैं यहाँ पर। यहाँ पर टीचिंग की जॉब नहीं होती है, बिकॉज बहुत ही कम होती है, बिकॉज यहाँ ओनली 8 फार्मेसी कॉलेज है, 8 फार्मेसी कॉलेज है। आई थिंक यू आर फ्रॉम जयपुर, राइट? जयपुर में शायद 50-100 कॉलेज होंगे फार्मेसी के, है ना? यहाँ पूरे ऑस्ट्रेलिया में सिर्फ 8 कॉलेज हैं, तो आप लगाइए यहाँ पर इतने कॉलेजेस नहीं होते हैं। Okay. इसीलिए इन लोग को फार्मासिस्ट चाहिए। बाहर से इनको हर साल 2500 से 3,000 फार्मासिस्ट चाहिए होते हैं। Okay. Sir, there is another question in chat box. The total expenses done during all the process exam and council registration visa. Yes, even you know, I think I forgot to mention, we also provide the EMI facilities without, you know, आपको लोन करा सकते हैं हम लोग विदाउट, यू नो, इंटरेस्ट रेट। तो आप 12 महीने में पे कर सकते हो ये जो फीस है। और ऑन एन एवरेज जो बेसिकली जो पैसे आप जो पे कर रहे हो, इन जनरली बेसिकली 70% फीस जो है गवर्नमेंट को ही आप पे कर रहे हो। लाइक उनका असेसमेंट की फीस होती है, जब आप एग्जाम में बैठोगे तो उसकी फीस होती है, फिर आप जब इंग्लिश का एग्जाम दोगे उसकी फीस होती है, फिर आप जब आप वीजा फाइल करोगे वीजा की फीस होती है। तो इन जनरल 70% फीस जो है आप गवर्नमेंट को ही दे रहे हो, बट अराउंड 5 लाख आप मान के चलो, 5 से 6 लाख मैक्सिमम आपका खर्चा होगा। नेहा शर्मा has a doubt, sir. Can I write KAPS India? हाँ जी, हमने वही तो बताया था, ये इंडिया में ही लिखना है। ये आपको दिल्ली में सेंटर है उसका, दिल्ली में, गुड़गांव में और नोएडा में, ये 3 सेंटर है नॉर्थ इंडिया में। बाकी पुणे, मुंबई, बेंगलोर, हैदराबाद, चेन्नई, 8 सेंटर हैं पूरे इंडिया में। इवन जो हमारे कंट्रीज जो है, फॉर एग्जांपल बांग्लादेश, वहां पर सेंटर नहीं है, तो बांग्लादेशी भी इंडिया में आते हैं एग्जाम देने। पहले नेपाल में भी सेंटर नहीं था, नेपालीज भी इंडिया में आते थे एग्जाम देने, वहां पर अभी एक सेंटर ओपन किया गया है। गुड आफ्टरनून सर। यस मिश्रा जी, हाउ आर यू? सर फाइन सर। सर मेरा एक प्रश्न आपसे था कि ये जो एंट्रेंस एग्जाम के लिए आपने बताया, हम लोग इंडिया में इसका सर कुछ टाइमिंग जो होता है वो कब कब का होता है? मतलब हम इन ईयर कब कब इस एग्जाम को दे सकते हैं, मतलब ऐसा कुछ है इसमें? यस, ये एग्जाम एक साल में 3 बार होता है। वो है मार्च, यस, मार्च, जुलाई और नवंबर। इसका मतलब डेट स्पेसिफाइड है, टाइम डे जो है वो फिक्स है। ओके सर। तो सर इसके, हेलो सर। यस सर मैं ये पूछने में था, तीनों एग्जाम का पैटर्न एक ही है, मतलब इसमें ऑनलाइन ही होता होगा? ये सेम एग्जाम है बेसिकली, पैटर्न एक ही है? हाँ, सेम ही एग्जाम है। तो मतलब वो 3 बार कंडक्ट करते हैं। जैसे जीपैट एग्जाम में एक बार होता है, एक साल में, है ना? राइट सर, राइट। अगर वो 2 बार ले लें या 3 बार ले लें, बच्चों को ज्यादा चांस मिल जाएगा। तो इस एग्जाम के लिए 3 बार कंडक्ट करते हैं, बिकॉज दे नीड लॉट ऑफ फार्मासिस्ट इन ऑस्ट्रेलिया। राइट सर, राइट। ओके सर, थैंक यू सर। थैंक यू। महेश, आपको कुछ डाउट पूछने के लिए है तो आप अनम्यूट करके पूछ सकते हो, क्योंकि आपका एफर्ट्स बहुत टाइम से दिख रहा है हमें कि आप कुछ बोलने की कोशिश कर रहे हैं। आप कुछ पूछ रहे थे महेश? मे बी तुम, यू कैन राइट आल्सो योर क्वेश्चन, अदरवाइज यू कैन अनम्यूट और यू कैन आस्क डायरेक्टली क्वेश्चन। या यू कैन अनम्यूट इफ देयर इज। मैंने आपने ही अरेंज किया है, ये आपने अरेंज किया, दिस इज नॉट फॉर फैकल्टी, राइट? तो आप क्वेश्चन कीजिए जो स्टूडेंट है। Sir, there is a question from Surendra Singh. Sir, B Pharma student also required 2 years experience
have नो, must. I think इट्स नॉट रिक्वायर्ड। मैंने बताया था अगर आपको इंडस्ट्रियल फार्मासिस्ट पे जाना है तो उसमें 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। अगर एज ए फार्मासिस्ट अगर आपको बनना है तो उसमें एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। और फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे एक्सपीरियंस ये लोग काउंट नहीं करते। महेश क्या कर रहे हो आप? प्लीज या तो आप क्वेश्चन करो अपना या म्यूट करो अपने आप को। तो एक्सपीरियंस जो है ना, जैसे कि कोई बच्चा अगर जॉब कर रहा है फॉर एग्जाम्पल इन सेल्स एंड मार्केटिंग, या कोई क्लिनिकल रिसर्च में है, या कोई मेडिकल राइटिंग में है ना, means that you must need to work in retail pharmacy or hospital pharmacy, वही एक्सपीरियंस काउंट होगा। तो फार्मासिस्ट में कोई एक्सपीरियंस चाहिए नहीं, मैंडेटरी नहीं है। अगर आपके पास में है तो गुड, नहीं है तो कोई बात नहीं है। sir, there are rules and regulations for the pharmacy practice in India. So the rules and regulations for Australia also included in the syllabus for the exam. नो, बेसिकली यहाँ पर सिंपल सा आपकी जो फार्मेसी की पढ़ाई है उसके बारे में पूछेंगे क्वेश्चन वो। और जब आप यहाँ आ जाओगे ऑस्ट्रेलिया में, वंस यू आर इन ऑस्ट्रेलिया, तो यहाँ पर 1 साल का आपका ट्रेनिंग होगा एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट के अंडर में। रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होगा ऑस्ट्रेलिया में, वो आपको सिखाएगा, पढ़ाएगा, बताएगा कि भाई कौन कौन से रूल हैं, कौन कौन से रेगुलेशन है, कैसे आपको यहाँ काम करना होता है, कैसे बात करते हैं पेशेंट से, कौन कौन से सॉफ्टवेयर हैं, बहुत सारी चीजें। So we cannot join as a pharmacist, but assistant pharmacist. नहीं, फार्मासिस्ट को ही आपको ज्वाइन करना है। असिस्टेंट फार्मासिस्ट की कोई जॉब नहीं होती है, उसको कोई वीजा नहीं मिलती है। ठीक है, अगर आपको वीजा लेना है, ऑस्ट्रेलिया आना है, तो आपको एग्जाम पास करना है टू बिकम ए फार्मासिस्ट। ठीक है, तो जो पहली जॉब होती है वही फार्मासिस्ट, वो उसको बोलते हैं मतलब इंटर्नशिप करते हो आप। और इंटर्नशिप इंडिया में फ्री में होती है। जैसे आपने डिप्लोमा किया, अगर आपने देखा होगा कि आपने 3 मंथ की ट्रेनिंग होती है बी फॉर्म में या डिप्लोमा में, वो लोग फ्री में करते हैं। या फार्मडी वाले बच्चे होते हैं 1 साल की इंटर्नशिप करते हैं, फ्री में करते हैं इंडिया में। यहाँ पे आपको सैलरी मिलेगी, जॉब बेसिकली। तो उसमें आपको $30 पर आवर के हिसाब से सैलरी मिलती है। वो अराउंड में अगर मैं कैलकुलेट करूँ इंडियन रुपीज में, वो जाते हैं करीब 3 लाख रुपए पर महीना हो जाते हैं आपको डे 1 से आपको जॉब जो मिलती है। अरविंद कुमार, इफ यू हैव एनी डाउट आप अनम्यूट करके पूछ सकते हो, अपने हैंड रेज किया हुआ है। अरविंद, कैन यू प्लीज अनम्यूट? अरविंद, How much time duration have got pharmacist license? दिस इज फॉर लाइफ टाइम ना। एक बार अगर आप आ गए थे, इंडिया में क्या होता है, वंस यू बिकम ए रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट इन इंडिया, देन यू हैव टू रिन्यू योर लाइसेंस। परस घड़ी चाबी अंगूठी सिक्का ये निकाल दो आप सब। 20 रुपया में Mahesh, इसको म्यूट Mahesh, this would be the last time. If you are again creating trouble, I would be forced to remove you from the meeting. नहीं यार, लगा के बात तो कर लो जो। अरविंद क्या पूछ रहे हैं आप? यस, तो अनीता इसके लिए जो है ना, ये आप अपना फोन नंबर, ईमेल देंगे तो हमारा टीम आपसे कॉन्टेक्ट करेगा। तो प्लीज लीव योर फोन नंबर, ईमेल, तो हमारा टीम आपसे कॉन्टेक्ट करेगा, है ना। फिर अब आपको बताएंगे कैसे कैसे करना है। इवन मुजफ्फर आल्सो इज हियर, यू नो, so he will talk to you. Muzaffar basically he is from Rajasthan, so he passed this exam from academically, you know, इसने इंग्लिश का पास भी कर लिया, उसने कैप्स भी पास कर लिया, और अभी वो यहाँ पे आने वाले हैं। तो यहाँ पे एक फॉर्म चैट बॉक्स में, आप इस फॉर्म को फिल कर दीजिए, तो हमारा टीम आपसे कांटेक्ट करेगा। ठीक है, वो आपको फोन करेंगे, आपको पूरा बताएंगे, आपको सारा इन्फॉर्मेशन देंगे व्हाट्सएप पे, इवन वीडियो कॉल करेंगे आपके साथ में वन ऑन वन। तो कोई भी डाउट है आप उनसे वन ऑन वन पूछ सकते हो। तो इस फॉर्म को प्लीज फिल कर दीजिए, और इट इज फ्री बेसिकली। आप ज्वाइन करो नहीं करो डजंट मैटर, पर आप फिल कर देंगे तो क्या रहेगा कि हमारे पास में जो इन्फॉर्मेशन रहती है, कुछ न्यू इन्फॉर्मेशन है, कुछ न्यू अपॉर्चुनिटी, तो हम लोग आपको ईमेल करते रहेंगे, बताते रहेंगे कि भाई ऑस्ट्रेलिया में ये जगह है या कहीं दूसरी कंट्री में जगह है फार्मासिस्ट के लिए, तो आपको हम बताते रहेंगे। अगर आपको विदेश में जाना है, जॉब करना है, तो यू कैन फिल दिस फॉर्म, तो वी विल यू नो लेट यू नो द इन्फॉर्मेशन जो भी रहेगा हमेशा। एंड यू गाइज आल्सो कैन फॉलो मी ऑन माय यूट्यूब। तो मैं हमेशा से कंटेंट बनाता हूँ, जितनी भी न्यू वैकेंसीज आती हैं, जॉब्स होती हैं कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर कैसे होता है, कौन सी यहाँ पर
ये हमारा चैनल है, यहाँ पर इसको आप सब्सक्राइब कर सकते हो। 165,000 के ओनली सब्सक्राइबर्स हैं इसके। तो हम लोग यहाँ पर बहुत सारे वीडियो डालते रहते हैं फार्मासिस्ट के बारे में। तो जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट हमारे जिन्होंने पास किया है, उनके इंटरव्यूज भी होंगे। जैसे ये यहाँ पर दीपक का है, ये एक अपना नवीन था इंडिया से, ये एक ये भी एक लड़का, ये MR है बेसिकली सिप्ला में, मुंबई में, है ना। तो ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो हमारे पे, जैसे ये एक लड़का है पाकिस्तानी, जिसको ये यहाँ पे अपना अंदर एक लड़का है ना। तो ऐसे बहुत सारी स्टोरीज हैं, आप उनको जाकर देखिए, आपको बहुत ज्यादा लर्निंग मिलेगी कि उन लोगों ने कैसे किया, कैसे यहाँ पर आके फार्मासिस्ट बने, कैसे यहाँ पे जॉब करे, कितने बजे आदमी कर रहे हैं वो लोग, है ना। उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया यहाँ बहुत सारी। ये लड़की थी, सिंगल लड़की, इसने एग्जाम पास किया, अभी यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में इसको वीजा भी ग्रांट हो गया है, जो है लिंडा के लिए। और ये हम लोग जो है लोन कराते हैं फ्री में, नो इंटरेस्ट रेट पर, वो भी आप लोग देख सकते हो यहाँ पर। तो लाइक सब्सक्राइब कर लें इस वीडियो चैनल के लिए, तो आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी फार्मेसी से रिलेटेड। अगर आपको सर ये हमारी बनाते हैं या और कुछ भी बना देते हैं ये? नहीं सर, क्या अरविंद? अरविंद, एक बार आप अनम्यूट करके ठीक से पूछ सकते हो, कुछ डाउट है कि नहीं? अरविंद, आप कुछ पूछ रहे थे? नहीं, आई थिंक कोई क्वेश्चन है नहीं अब। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स कोई भी पार्ट हो, मतलब आपका जो डॉक्यूमेंट वाला पार्ट हो, या वीसा का पार्ट हो, या एग्जामिनेशन का पार्ट हो, जो भी पार्ट जो प्रेजेंटेशन से आपको क्लियर नहीं हुआ हो, वो उसके बारे में भी आप पूछ सकते हो, क्योंकि सर है अभी यहाँ पे और आपके लिए डाउट्स जो क्लियर कर पाएंगे सर। ठीक है, और वी रिक्वेस्ट यू टू फिल द फीडबैक फॉर्म, कि आपको कुछ सजेशंस है वो भी हमें बता सकते हो, ताकि आने वाले सेशंस आपके लिए हम बेहतर बना पाए। आई थिंक मुजफ्फर शिवा वी कैन फिनिश। आई थिंक कोई क्वेश्चन है नहीं अभी इनका। अगर कोई क्वेश्चन प्लीज, अगर फैकल्टी का भी है, किसी का भी है, प्लीज पूछ लीजिए अभी। यस, आई रिक्वेस्ट द फैकल्टीज आल्सो। इस फॉर्म को फिल कर दीजिए, तो फिर बाद में आपको इंडिविजुअली भी आप बात कर सकते हो, पूछ सकते हो, अगर आप ग्रुप में नहीं पूछ पा रहे हो तो। और अगर आप अपना क्वेश्चन लिख दोगे उसमें चैट बॉक्स, उसमें जो है फॉर्म में, तो हमारी टीम आपसे कनेक्ट करके वो आपको उसको आंसर करेंगे, बताएंगे आपको पूरा गाइड। जी सर, ये बेटर रहेगा, बिकॉज हमें समझता हूँ कि काफ़ी बंदों ने क्वेश्चन पूछे। अगर कोई किसी को कुछ डाउट है तो ये जो फॉर्म है वो फॉर्म आप फिल कर दीजिए और वी विल गेट बैक टू यू। एक्चुअली मेरा नाम मुजफ्फर अली है और मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाता हूँ। मैं स्टूडेंट रहा हूँ श्री बालाजी कॉलेज ऑफ फार्मेसी का इन द ईयर 2005-2009। तो मैं फर्स्ट टाइम में केस पास कर चुका हूँ और मैं अपने वीज़ा के लिए भी अप्लाई कर चुका हूँ। तो मोस्ट प्रोबेबली इस मंथ के एंड में इंशाल्लाह वीज़ा आ जाएगा। तो अगर किसी को कोई डाउट है इस रिगार्डिंग तो वो जस्ट फॉर्म फिलअप कर दे और वी विल गेट बैक टू यू आफ्टर दैट। और अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं क्वेश्चन, तो यू विल फील फ्री टू आस्क एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन रिगार्डिंग कैप्स और जॉब अब्रॉड। मुजफ्फर बेसिकली योर बेसिकली अलुमनाई, आपके कॉलेज से इन्होंने अप्लाई किया था, तो आई डोंट नो दिस, यू नो। जी, मैं इसी कॉलेज से पास आउट हूँ। 2009 में मेरी डिग्री हो गई थी कंप्लीट। मैंने कुछ टाइम जयपुर में ही काम किया एज ए मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव फाइजर कंपनी में। आफ्टर दैट आई वेंट टू सऊदी अरेबिया। मैंने कुछ टाइम वहाँ पे काम किया। फिर मैंने जयपुर में फिर से ज्वाइन किया और जब कोविड का टाइम था तो मैं वर्क फ्रॉम होम कर रहा था। उसके बाद मेरी मुलाकात ऑनलाइन डॉक्टर अकरम से हुई और
इन्होंने मुझे जो है पूरा पाथवे समझाया ऑस्ट्रेलिया जाने का। चाबी सब निकाल तो दिया। अगर बाद में पूछना चाहते हैं तो जस्ट फिल आउट दिस फॉर्म एंड वी विल गेट बैक टू यू लेटर। यस I think प्लीज it's फिल okay, कर sir. दें फॉर्म को, तो हम लोग बाद में सकते हैं। यस सर। जी सर, ओवर टू यू। ओके। So Anita, what you can do is that you can have the feedback form filled and mention in the same if you have any such doubts. Our team will reach out to you and have the details shared with you. Yes, sir. Please, sir. Okay, then we can finish. I think there's no much question. Okay. Hello? So Hello? much. Yes. Yes, sir. Yes, sir. Thanks, Atan, for sharing such a brilliant presentation on the given theme. We request Dr. Ahmad to keep on sharing his ideas with us in the time to come. I hope that the recipients or the participants will surely get benefited with your full of wisdom tutelage. I, on behalf of SBCET as a TPO, thank you all the team members and coordinators and the students, especially our coordinator, Ms. Richa Agarwal ma'am, our principal, Sir Pavan Basliwalji, our management for making this webinar a wonderful one. Thank you everyone from SBCP Jaipur. Stay connected, stay healthy. Jai Hind. Okay, we can finish. Okay, thank you so much. Bye. Thank you, sir. थैंक यू सर। नाम क्या भैया आपका? रवि। रवि, इसमें अच्छी तरह से डाउनलोड कर लो, पेट के पीछे डाल दो सब। और ये आईडी मिला दे रहा भैया। आज